Good morning, children. Welcome back to our online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Jeena, your Hindi teacher. Today, let's learn about our new lesson, lesson 16, Do Legu Kadaye. It means two short stories. बच्चों, इस पाठ में दो लघु कथाएं दी गई है। कैदी एक कहानी, ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है। दूसरी कहानी दो आदर्श मित्रों की है। कैदी प्रिजनर जीवन के सुख दुख का प्रतिबिंब इंसान के चेहरे पर हमेशा दिखाता रहता है, लेकिन उसे ढूंढ निकालने की दृष्टि केवल एक चित्रकार के पास होती है। The reflection of life's happiness and sorrow is always visible on the face of man, but only a painter has the vision to find it. वह भी एक चित्रकार था। He was also a painter. भावना और वास्तविकता का अद्भुत सामंजस्य होता था उसके बनाए चित्रों में। There was a wonderful harmony of emotion and relating in his paintings. एक बार उसके मन में आया कि ईसा मसीहा का चित्र बनाया जाए. Once it came to his mind to draw the picture of Jesus Christ. सोचते सोचते उसके दिमाग में एक नया प्रसंग उभर आया. Thinking a new topic emerged in his mind. छोटे से ईसा को एक शैतान हट्टर से मार रहा है. Killing the little Jesus with a stone cutter. लेकिन न जाने क्यों ईसा मसीहा का चित्र बन ही नहीं रहता. But did not know why the picture of Jesus Christ was not being made. चित्रकार की आंखों में ईसा की जो तस्वीर बनी थी उसका मानव रूप में दर्शन दुर्लभ ही था. The picture of Jesus in the view of the painter was rare in human form. बहुत तलाश लेकिन वैसा तेजस्वी मुकुटा उसे कहीं नहीं मिला. He searched a lot but could not find any such glorious face. एक दिन बगीचे में टहलते हुए उसकी नजर अनाथालय के 8 बरस के बालक पर पड़ी जो बहुत भोला था. One day while walking in the garden, he saw an 8-year-old boy in the orphanage who was very innocent. बिल्कुल ईसा की तरह सुंदर और निष्पाप. Just as beautiful and innocent as Christ. उसने बालक को गोद में लिया और शिक्षक से इजाज़त लेकर उसे अपने स्टूडियो में ले गया. He embraced the child, took permission from his teacher, and took him to his studio. बेहद उत्साह में भरकर उसने कुछ ही मिनटों में बालक का चित्र बना डाला. Filled with great enthusiasm, he made a picture of the child in a few minutes. चित्र पूरा कर वह बालक को अनाथालय में पहुंचा आया. After completing the picture, the child was taken back the orphanage. अब ईसा के साथ शैतान का चित्र बनाने की समस्या उठ गई हुई. The little Jesus was being visited by a devil. वह एक क्रूर चेहरे की तलाश में निकल पड़ा. He set out in search of a cruel face. दिन के कौन कहे महीनों बीत गए. Who has set months of the day. शरबगानों गुडों के ठिकानों की गाक चानी
लेकिन उसे शैतान कहीं नहीं मिला. The taverns searched the goons' hideouts but found no terrible. 14 साल पहले बनाया गया चित्र अभी तक अधूरा पड़ा था. The picture made 14 years ago was still incomplete. अचानक एक दिन जेल से निकलते हुए एक कैदी से उसकी मुलाकात हुई. Suddenly, one day he met a prisoner while leaving the prison. संवाला रंग, बड़े हुए बाल, दाढ़ी और विकट हंसी. He had a hairy beard and a outrageous laugh. चित्रकार खुशी से उछल पड़ा. The painter jumped with joy. 2 बोतल शराब के बदले कैदी को चित्र बन जाने तक रुकने को राजी कर लिया. In of 2 bottles of wine, the prisoner agreed to stay until the picture was made. बड़ी लगन से उसने अपना अधूरा चित्र पूरा किया. He completed his unfinished picture with a great dedication. ईसा को खंडर से मारने वाले शैतान का उसने हूबहू चित्र उतार लिया. He took a picture of the victim who killed Jesus with a hunter. महाशय, जरा मैं भी चित्र देखूं, कैदी बोला. Sir, may I also see the picture? The prisoner asked. चित्र देखते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई. On seeing the picture, drops of sweat emerged on his forehead. वह इकलाते हुए बोला, क्षमा कीजिए. He said, stuttered and said, sorry. आपने मुझे अभी तक पहचान नहीं. You have not recognized me yet. मैं ही आपका ईसा मसीहा हूँ. I am your Jesus Christ. 14 बरस पहले आप अनाथालय से मुझे स्टूडियो में लाए थे. 14 years ago, you brought me to the studio from the orphanage. मुझे देखकर ही आपने ईसा मसीहा का चित्र बनाया था. You have drawn the picture of Jesus Christ after seeing me. सुनकर कलाकार हैरान रह गया. The artist was surprised to hear. Then, children, our next story, The Adarsh Mitra, 2 ideal friends. Children, I summarized this lesson. Please listen. The second story is about deep friendship between Nicholas and Beck. Nicholas was lazy, naughty, and a liar. Beck was hardworking, straightforward, and truthful. Once Nicholas did some mischief in the class, but Beck took the blame on himself and was severely punished. This incident brought a complete change in Nicholas' nature. He promised Beck that he would never lie or do any mischief. When Nicholas grew up, he became a judge. Meanwhile, Beck, who was a supporter of monarchy, got arrested by Cromwell, who was Democrat. With a heavy heart, Nicholas had to pronounce death sentence to his dearest friend. But Nicholas felt very disturbed after pronouncing the death sentence. He straightway went to Cromwell and narrated him the kind act of Beck at school. Cromwell issued a letter of pardon to Nicholas. Nicholas did not have peace of mind till he delivered the letter of pardon to his friend Beck. The 2 friends were reunited after 40 years.
Children, our text activity, page number 110 and 111, activity 3 and 4 only. Activity 3, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए. आंख, नेत्र, नयन, चक्षु. मित्र, सखा, सहचर, दोस्त. शिक्षक, गुरु, आचार्य, अध्यापक. आनंद, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष. विद्यालय, पाठशाला, शाला, स्कूल. Then children, activity 4, विलोम शब्द लिखिए, opposite words. दुर्लभ, सुलभ. समर्थक, clear it, write there का, not na, the write it का. समर्थक. विरोधी, निकट, दूर. श्रम, आलस्य. समस्या, समाधान. सुख, दुख. Children, please copy this activity in your textbook. Let me conclude today's session. I have attached notes and test paper. So all of you attend test paper and post it. See you in the next class. Bye.